Good morning, students. Today we are going to start the chapter from page number 25. See paragraph number 1. Blazing sunshine that heated it to 149 degrees Fahrenheit. Right. Nothing buzzed. He reported with the scientific detachment that the consolidated material. Nothing buzzed. Buzzed. What do you mean buzzed? Students, the meaning of buzzed is moved, right? He reported with scientific detachment. What do you mean detachment? Students, you must have to write down each and every word, right? In your textbook. Detachment means objectivity, right? The meaning of detachment is objectivity. That you can say detachment that the consolidated material had to be chiseled away. What do you mean consolidated? Students, the meaning of consolidated is जैसे इकट्ठा हुआ, जमा हुआ, तो आप consolidated को बोल सकते हो collected or deposited, right? Material had to be chiseled away from beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king's remains. Had to chiseled away. Material had to be chiseled away. What do you mean chiseled away? Here the meaning of chiseled away is separated with a chisel. ठीक है ना? Chisel जो छेनी होती है ना उसको chisel बोलते हैं. From beneath the limbs. From beneath the limbs. Here the meaning of beneath is below the limbs. Limbs you can say it's a part of body, and trunk जो धड़ होता है हमारा, the main part of the body is known as trunk. Before it was possible to raise the king's remains. देखो उसकी जो body है टट्स मम्मी की, उसको रेज किया जा रहा है. Now see, in his defense, Carter really had little choice, right? In his defense, here the meaning of defense is safety, right? In his defense, Carter really had little choice if he had not cut the mummy free. Thieves most certainly would have circumvented the guard and ripped it out. देखो, thieves most certainly would, अगर ऐसा नहीं करा तो it must be, the probability must be there, would have circumvented. देखिए बोल्ड लेटर्स में आया, circumvented होता है फंसा देना किसी चीज को, मीन्स entrapped और cheated something, right? entrapped भी बोल सकते हो आप और cheated भी, right? The guards and ripped it apart to remove the gold, and guard and ripped it apart. What do you mean ripped? Ripped means cut it open, right? Apart means separate, right? Separated means apart. To remove the gold. In Tut's time, the royals were, देखिए, now see the custom in Tut's time, what sort of ritual they are following. In Tut's time, the royals were fabulously wealthy. Fabulously means students, fabulously means you can say surprisingly, yeah, astoundingly, right? Wealthy means wealth, धन था उनके पास. And they thought or hoped they could take their riches with them. They could take their riches with them. Riches, students, riches यहाँ पे किसको signify करता है? riches जो word है यहाँ signify करता है wealth को, right? For his journey to the great beyond. For his journey to the great beyond. What do you mean beyond? Students, great beyond का meaning है, the meaning of great beyond is beyond depth, right? क्योंकि उससे बड़ा कुछ नहीं है. King Tut was lavished with glittering goods. King Tut was lavished with. Lavished means showered with. Glittering goods, right? Glittering means shining. Precious collars, inlaid necklaces and bracelets, rings, amulets, a ceremonial apron, sandals, sheaths for his fingers and toes. Sheaths for his fingers. Sheaths होती है जैसे जो मयान होते हैं, तलवार जिस मयान में रहती है, that is also known as sheaths, right? And toes, and the now iconic inner coffin mask, जो नकाब है, mask. All of the prize gold to separate it from his adornments. Students, the things for decoration is known as adornment, right? जो सजावट की चीजें हैं, that is known as adornments. Carter's men removed the mummy's head and several
and severed nearly every major joint. Severed means separated, means they separated nearly every major joint. Once they had finished, they reassembled the remains on a layer of sand in a wooden box with padding that concealed the damage the bed. देखिए concealed the damage. What do you mean concealed? Students, the meaning of concealed is hid, छुपा रखी थी. The damage, right? The damage. The bed where tut now rest. Damage means नुकसान जो होता है उसको डैमेज बोलते हैं. डैमेज मीन्स हार्म, राइट? द बेड वेयर टट नाउ रेस्ट्स. So students, you see, this is all about the research of Howard Carter. Now we are talking about the archaeology. Archaeologist मैंने बताया था, the scientist who studies the ancient remain is known as archaeologist. और यहाँ पे जो science है जिसका वो use करते हैं, that is known as archaeology. Archaeology means science of studying ancient remains or ancient sites or ancient buildings, right? Archaeology has changed substantially in the intervening decades. Substantially means greatly, बहुत तेजी से इसमें परिवर्तन आया है, चेंजेस आए हैं. इन द इंटरवेनिंग, वन में इंटरवेनिंग, इन बिटवीन डेकेड्स होता है, 10 years का एक डेकेड्स होता है. फोकसिंग लेस ऑन ए ट्रेजर एंड मोर ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ. अब ट्रेजर पर वो कम जो है फोकस करते हैं, मोर किस पे? मोर ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ. में फैसिनेटिंग मीन्स अट्रैक्टिव, डिटेल्स ऑफ लाइफ एंड इंटरव्यूइंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ. इंटरव्यूइंग मिस्ट्रीज, देखो मिस्ट्रीज तो आपको पता है, लेकिन उसके आगे कौन सा वर्ड ऐड हुआ है? इंटरव्यूइंग मीन्स मिस्टीरियस, सीक्रेट्स जो होते हैं ना. मिस्ट्री तो होता है सीक्रेट, और इंट्रिग्यूइंग का मीनिंग होता है मिस्टीरियस, राइट, ऑफ डेथ. इट ऑल्सो यूजेस मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स. व्हाट इज माय टूल्स तो आपको पता है, इट्स वेरी सिंपल. व्हाट इज माय सोफिस्टिकेटेड? स्टूडेंट्स, द मीनिंग ऑफ सोफिस्टिकेटेड इज मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड मॉडर्न, राइट, including medical technology. In 1968, more than 40 years after Carter discovery, an anatomy professor. What do you mean by anatomy? Anatomy professor. Students, anatomy एक साइंस है, एंड जिसको आप कह सकते हो रिलेटेड टू द बॉडी. जो देखो, जो शरीर की हमारी रचना है, जो हमारे शरीर की संरचना है, उससे रिलेटेड जो साइंस है, दैट इज नोन एज एनाटॉमी. मीन्स द साइंस रिलेटेड टू द ह्यूमन बॉडी इज नोन एज एनाटॉमी. तो उसके जो एनाटॉमी प्रोफेसर हैं, एक्सरेड द ममी एंड रिवील्ड ए स्टार्टलिंग फैक्ट. रिवील्ड मीन्स शॉर्ड, ए स्टार्टलिंग. देखो स्टार्टलिंग होता है अमेजिंग. फैक्ट, क्या फैक्ट है? देखिए, beneath the resin that cakes his chest. देखिए, beneath the resins. What do you mean beneath? Here the meaning of beneath is below the resins that cakes his chest. What do you mean chest? You know, it's very simple. What do you mean cakes? Student, here the meaning of cakes is covers his chest. That covers his chest. His breastbone and front ribs are missing. देखो रिसर्च में क्या सामने आया. What would the amazing facts are there? That ribs means bones of the lungs are known as ribs are missing. जो वो है मिसिंग है, ठीक है. That sort of result. Today, diagnostic imaging can be done with computed tomography. Today, diagnostic means जिसको हम एग्जामाइन कर सकें. जैसे डायग्नोज करता है डॉक्टर, हमें डायग्नोज करता है, मतलब डॉक्टर हमें एग्जामाइन करता है. दैट एग्जामाइंस, राइट. इमेजिंग कैन, व्हाट इज माय इमेजिंग? Capturing images is known as imaging. Can be done with computed tomography. What do you mean computed? Students, bones of the lungs is known as computed tomography. Tomography क्या होता है? देखो, computed tomography जो word है, that is something different, right? कंप्यूटेड वर्ड अलग है, टोमोग्राफी वर्ड अलग.
तो क्या समझते हैं आप कंप्यूटेड टोमोग्राफी से? बस थिंक अबाउट इट. और ये इसमें आपके जो एक्सप्रेशंस थे, एक्सप्रेशंस में भी आया था कंप्यूटेड टोमोग्राफी, राइट? सो इट्स इम्पॉर्टेंट वर्ड, राइट? स्टूडेंट्स बड़ा सिंपल है. कंप्यूटेड जो वर्ड है मीन्स कंप्यूटराइज्ड. समथिंग इज कंप्यूटेड मीन्स कंप्यूटराइज्ड. एंड टोमोग्राफी क्या होता है? टोमोग्राफी स्टूडेंट्स एक टेक्निक होती है. इट्स अ टेक्निक ऑफ बॉडी एग्जामिनेशन थ्रू एक्सरेज, राइट? is known as tomography. Means with the help of x-rays, when we have to study of the human body through x-rays, with the help of x-rays, that is known as tomography. And when it will be with the help of computers, then it is known as computed tomography, जिसको आप लोकल लैंग्वेज में या नॉर्मली आप सीटी स्कैन बोलते हैं ना, सीटी स्कैन करवाया है, दैट इज नोन एज कंप्यूटेड. और सीटी, by which hundreds of X-ray in cross section are put together like slices of bread to create a three-dimensional virtual body. By which hundreds of X-rays in cross section are put together like slices of bread, right? Like slices of bread. Slices means pieces of bread to create a three-dimensional virtual body. To create a three-dimensional. What do you mean three-dimensional? जिसके 3 डायमेंशन आप साइंस में पढ़ते हो, लेंथ हो, ब्रेड्थ हो, हाइट हो, इज नोन एज, मीन्स आप इनको तीनों को मिलाएंगे तो उसका क्या निकल जाएगा? वॉल्यूम निकल जाएगा. हैविंग वॉल्यूम इज नोन एज 3 डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी. वर्चुअल, आपकी क्लास 10th में एक चैप्टर पढ़ा था आपने, वर्चुअली ट्रू. तो वहां पे वर्चुअल का मीनिंग क्या था? रियल, राइट? सो हियर द मीनिंग ऑफ वर्चुअल इज रियल बॉडी. What more would a CT scan reveal of TERT than the X-ray? What more would a CT scan reveal means जो शो करता है, रहस्य खोलता है, of TERT than the X-ray? And could it answer two of the biggest questions still lingering about him? देखिए ये क्वेश्चंस आपको याद आएगा, मैंने अभी इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको फर्स्ट वीडियो में बताए भी थे. The two biggest questions still lingering about him. Lingering means अभी मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में. मीन्स lingering means something hanging for a long time. काफी लंबे समय से लटकी हुई जो चीज है उसको बोलते हैं लिंगरिंग. हाउ डिड ही डाई एंड हाउ ओल्ड वॉज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ? एट द टाइम ऑफ हिज डेथ. किंग टर्ट्स डिमाइस वॉज ए बिग इवेंट. किंग टर्ट्स डिमाइस, व्हाट डू यू मीन डिमाइस? डिमाइस मीन्स डेथ. ठीक है स्टूडेंट्स, डिमाइस मीन्स डेथ. वॉज ए बिग इवेंट. Even by royal standards, देखिए ध्यान से, even by royal standards, he was the last of his family line. Even by royal standards. What do you mean by royal standards, students? देखो किंग टट की जो डेथ है, किंग टट्स डिमाइस मीन्स डेथ, वॉज ए बिग इवेंट, बड़ा इवेंट था. And even by royal standards, he was the last of his family line. Standard means scales, right? And his funeral was the death rattle of a dynasty. और जो उसका जो funeral था, जो उसकी अंतिम यात्रा थी, you can say अंतिम जो उसका संस्कार हुआ, funeral was the death rattle of a dynasty. What do you mean rattle? वो rattling sound के लिए भी यूज होता है, खड़खड़ाने की आवाज को हम बोलते हैं rattle, right? जिसको हम कहते हैं short loud noise when hitting against something hard is known as, you can say, rattling of a dynasty. Dynasty means जो वंश था उनका, जो family line थी उनकी. But the particulars of his passing away and its aftermath are unclear. But the particulars of his passing, particulars means हम कहते हैं यार I just want to see the particulars, means I just want to see the details. So here the meaning of particulars is details. Of his passing away and its aftermath are unclear. Unclear, right? Aftermath are unclear. What do you mean by aftermath? Aftermath means जो मरने के बाद बेटा. Aftermath means after dying, right? Are unclear. मतलब उसके मरने के बाद भी बहुत सी चीजें जो है क्लियर नहीं हो पाई. They are unclear. Unclear means not clear. Now see,
Students, in the upcoming paragraph, we are talking about the family line, the family of King Tut, the dynasty of King Tut, right? देखिए उसके फैमिली मेंबर्स के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा, मीन्स टॉकिंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ हिज फैमिली. देखिए, एमेनहेटॉप थर्ड, टर्ट्स फादर और ग्रैंडफादर, ये इसके या तो फादर थे या ग्रैंडफादर थे, जो कौन थे, वॉज ए पावरफुल फेरो. फेरो मैंने आपको बताया था, इजिप्टियन किंग इज नोन एज फेरो, हु रोल्ड फॉर ऑलमोस्ट 4 decades एट द हाइट ऑफ द 18th डायनेस्टी गोल्डन एज. 4 decades मतलब 40 साल, नियर अबाउट 40 years, बिकॉज 1 decade is equal to 10 years, right? His son Amenhotep IV succeeded him and initiated one of the strangest periods in the history of, देखिए, and initiated, Amenhotep IV जो था, succeeded him, succeeded means followed him, initiated means started, one of the strangest periods, started one of the strangest periods in the history of, strangest means unique period in the history of. Yes, students, please turn over. Of the ancient Egypt, the new pharaoh promoted the worship of the Aten. इस जो नया राजा था, जो नया इजिप्टियन किंग था, the new pharaoh promoted means encouraged what? Encouraged the worship of the Aten, the sun disk. Changed his name to Akhenaten, or servant of the Aten, and moved the religious capital from the old city of Thebes. To the new city of Akhenaten. ठीक है ना, उसने अपना सिटी भी चेंज कर दी, उसकी रिलीजियस कैपिटल भी चेंज कर दी, बिकॉज ही इज द डिवोटी ऑफ गॉड एटन, नोन नाउ एज अमरना. आप मैप में देख सकते हैं, अपनी एनसीईआरटी की जो बुक है आप देखेंगे, इसमें इस मैप में आपको सारी चीजें, ईच एंड एवरी नेम इज मेंशन इन दैट पर्टिकुलर मैप, राइट? सो वट एवर द मैप इज देयर, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है अमरना, राइट? यस स्टूडेंट्स, ही फर्दर शॉक द कंट्री. शॉक मीन्स उसने एकदम से स्टंट कर दिया कंट्री को, बाय अटैकिंग एमन. जो दूसरे पुराने गॉड थे एमन, उनको अटैक करके, अटैक मीन्स कि कोई उनको नहीं मानेगा, देयर इज नो डिवोशन ऑफ ए पर्सन, ए मेजर गॉड थे वहां के. क्या करा उसने? व्हाट सॉर्ट ऑफ एक्शन टेकन बाय हिम? स्मैशिंग हिज इमेजेस, स्मैशिंग मीन्स ब्रेकिंग हिज इमेजेस and closing his temples. It must have been a horrific time, say Ray Johnson. Horrific means terrible. डायरेक्टर हैं रे जॉनसन, किसके? डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर इन लग्जर. द साइट ऑफ एंशिएंट थेब्स, द साइट ऑफ एंशिएंट थेब्स. व्हाट मींस साइट? साइट मींस प्लेस. द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वाज कमिंग टू एन एंड. और जिस परिवार ने सेंचुरीज तक राज किया था, 1 century is equal to 100 years. And then Akhenaten went a little wacky. Here the meaning of wacky is odd, right? उसके बाद क्या हुआ? See next. After Akhenaten death. So students, in the next video we have to complete the chapter in the next video, and we have to start from after Akhenaten death, right? Means we have to start from page number 26. Thank you and take care.